some of them want to seek better opportunities. And of course, everybody has seen that Germany has very, very high standards, very good medical structure, medical studies, and more. We get regular messages from candidates who want to pursue their post-graduation in Germany, doctors who want to pursue their post-graduation in Germany. We also get a lot of messages and questions from students who are school students, like after 12th standard, and they want to pursue MBBS in a foreign country, and Germany comes to their mind. And we are bombarded by such questions, and they talk about several misconceptions that are there in the market, several false information that is there in the market. So Nisha and I, you know Nisha from our previous video. If not, then I will link that video in the description. You can watch that. She is a general surgery resident. She did her MBBS from India, and now she's working as a general surgery assistant in Germany. And she and I, we talked once, and we talked about this issue that there are so many people who seek this kind of information. Why not make a video and talk about these aspects of studying medicine in Germany? Welcome, Nisha. How are you doing today? Hello, I'm doing well. Thank you very much. Hello, everyone. So Nisha, tell us, how is it going? Like, how are these questions coming up, and what are the best general questions that you get about MBBS in Germany in this case? Sir, there are most people, especially the students who have recently passed out their 12th. Some of them want to seek better opportunities. And of course, everybody has seen that Germany has very, very high standards, very good medical structure, medical studies, and more opportunities, and also high demand for surgeons, doctors overall. So mostly students want to explore this area. कुछ ऐसे सोचते हैं कि why not try some other country? इंडिया में तो अभी तक पढ़ाई की है, कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं. So they do think about other countries like Germany. Mostly language की वजह से people prefer English है तो USA या England prefer करते हैं, but आजकल काफ़ी Germany भी prefer कर रहे हैं because of XYZ for positives. Right, oh, XYZ positives. Okay, ठीक है. I see the point. कि positives and negatives जो है तुम last में बताओगी सबको कि what are the okay right. Okay, that means the viewers जो देख रहे हैं they should watch this video to the end. That is what you mean. Right. Okay, of course. Now this is our gimmick that we are playing, and I hope that people will play with us together and watch this video to the end. And okay, fine, ठीक है. So see, reasons तो अलग-अलग होते हैं लोगों के why they want to pursue Germany. True. इसमें मैं भी कुछ contribute करूंगा. ऐसे होता है कई बार कि इंडिया के में जैसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इज अ वेरी coveted position. Like for that, the competition is so high that everyone cannot get into that. So बाकी जो इतने सारे लोग हैं वो क्या करेंगे? ऐसा नहीं है कि only people who cannot get into government medical college are not good students, और बहुत अच्छे students होते हैं, but सीट्स इतनी कम है तो फिर how can everyone get in that, right? Right. So they have made some arbitrary criteria कि अच्छा date of birth जिसका ज़्यादा है उसको हम preference दे देंगे, as in फिर वो physics में biology में जिसके ज़्यादा नंबर आए हैं उसको हम preference दे देंगे. तो इस तरह से arbitrary criteria है उसके, but कोई logical नहीं. It is just to cut down the competition, right? So बाकी लोग क्या करेंगे? तो बाकी लोग, people who can afford it, go into private medical colleges. Yeah. And otherwise people think कि चलो ठीक है बाहर देखते हैं. Then options आते हैं countries like Russia, China, Philippines nowadays, also Georgia, so non-EU countries basically, where seat is guaranteed. They can get admission seat with a guaranteed seat. तो जब लोग रिसर्च कर रहे होते हैं about these countries, तो मैप में देखते देखते come more like westwards. ओके, पोलैंड तक आते हैं, पोलैंड भी ठीक है, फिर जर्मनी पहुंच जाते हैं, फिर देखते हैं अच्छा ठीक है जर्मनी इज अ बेटर कंट्री, डेवलप भी है, तो चाइना जाने से बेटर है कि मैं जर्मनी चले जाता हूँ. ठीक है, the mentality this I'm talking about, the mentality, जो slope जो है ना, just slippery slope जिसको बोलते हैं, कि start with one place and then you think the slope वो सेम ही है, तुमको लगता है सेम ही है, लेकिन पहुंच जाते हो तुम उससे ऊपर. ठीक है, तो वहां पे इसीलिए मिसकंसेप्शंस जो हैं, ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो इसी वजह से आती है कि सबको लगता है कि जैसे बाकी कंट्रीज में 100% गारंटी होता है कि ठीक है यू अप्लाई एंड यू विल गेट एडमिशन सिक्योरली 100%.
So today we are going to discuss कि Germany का क्या scene है, right? So tell us, Nisha, duration क्या है Germany का? Like how, like about the MBBS curriculum, medical curriculum in Germany. मेडिकल स्पेशली मेडिकल को यहाँ पे मेडिसिन बोलते हैं जर्मन में. तो इट्स टोटल कोर्स ऑफ 6 years. 6 years में यू हैव 2 years ऑफ प्री क्लिनिकल, जिसके बाद यू गिव एन एग्जाम विच इज कॉल्ड स्टाट्स एग्जाम. द फर्स्ट वन होता है वो. उसके बाद यू हैव गॉट ये प्री क्लिनिकल में हमारे इंडिया के जैसे हमारे पास एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियो वाले सब्जेक्ट्स जो होते थे वो आ जाएंगे इस कैटेगरी में. उसके बाद जो हम क्लिनिकल करते हैं विच इज नेक्स्ट 3 years, उसमें हमारे मेडिसिन, सर्जरी, ऑफ्था, ईएनटी और ये सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे. उसके बाद स्टूडेंट्स आर सपोज टू गिव द सेकेंड स्टार्ट्स एग्जाम, जो आपका सेकेंड एग्जाम होता है. उसके बाद 1 साल का आपको और इंटर्नशिप करना होता है, जिसके बाद आप एक फाइनल एग्जाम देते हैं विच इज कॉल्ड योर थर्ड ड्यूटिस स्टार्ट्स एग्जाम. तो दिस इज लाइक इन टोटल ऑफ 6 years जो जर्मनी में मेडिकल स्टडीज है. So for a person who is in 12th standard now, वो Right. उसके लिए लेकिन this is not just 6 years, right? He has to do something additionally as well, Right. right? That's the tricky So part. yeah, so now tell us about that additionally क्या करना पड़ेगा लोगों को? एडिशनली सबसे बड़ी चीज़ हमारे यहाँ पे इंडिया में वी हैव गॉट इंटर्न जो बोलते हैं, या जो 11th-12th इंटर और 11th-12th जो बोलते हैं, विच इज़ अप टू 12th क्लास. जर्मनी में दे हैव गॉट एन एडिशनल 13th. तो वो 13th वाला आपको कवर करना होता है, विच मीन्स आपको first and foremost you need to be a graduate, you need to be a 12th graduate. आपने 12th standards आपको complete करना होता है. उसके बाद you need to have a basic level of German knowledge, which is basic मतलब medicine में, because you're studying medical, you have to communicate with the patients, it's most important. Minimum of B2, B1, B2, B1, B2 and C1 है. It depends on what sort of student colleague you're going to apply to. And student colleague is something which is this bridging course कहते हैं उसको, which bridges between which is the 13th year, which consists of 2 semesters, which is called 13th year, जिसको आप जहाँ apply करने के लिए you have to go to student colleague. ओके, इसका मतलब है कि 12वीं तक इंडिया में आप जहाँ से भी कर रहे हो 12th तक करो, एंड देन यू डू 1 year ऑफ दिस कोर्स, द स्टूडेंट कॉलेज जिसको कह रहे हैं, एंड आफ्टर दैट योर एमबीबीएस विल स्टार्ट और माइट स्टार्ट, ओके, इफ यू गेट एडमिशन इनटू. Might Start if you get admission into, right? Student colleague 12th तो बोला. So now the question I want to know is that if I'm a very bad student in 12th standard, right, I get 60% marks. Okay, now like in your view, what do you think? Like, is Germany's viable option for me? Does marks play a role? That is what I'm basically trying to. 100%, because I believe it's the reason I'm saying so is because आपके जो 10th और 12th का percentage होता है, most student colleague, they for applying over there you need to have German language. तो एक साइड वाली चीज हो गई. जो आपका 11th, जो आपका 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, या whatever your state exam is, जो भी आपका परसेंटेज आया है, वो परसेंटेज का सम लेते हैं वो लोग एंड जर्मन CGPA में कन्वर्ट करते हैं, which is like German marking system, which is like 1 to 5. 5 is the lowest and 1 is the highest. तो for example, if somebody has gotten 85 to 90 के बीच में percentage, they get like 1.5 or 2. And somebody more than 90, they get 1 or something, 1.2 or something like that. So that you need to have. In Germany, it's known that students who have got a very, very, very good note in, जिसको points बोलते हैं, या marks बोलते हैं, for example 1, yeah, maximum 1.5, they get into medical colleges. So I do believe it does play a very important role. So do you hear mean to say that medical curriculum or medical seats in Germany are also competitive, even for German students? Very, very competitive. And also Then, there's a huge, sorry, no, honey, you go ahead, please. The one point I do feel is, especially यहाँ पे foreign students के लिए भी, there is a lot of competition. For example, whatever number of colleges we have, we have around medical colleges, 43 medical colleges in Germany, from which 39 are government and 4 are private. So for the government colleges, you've got around 5% seats, which are for external students, international students, which means students belonging to third countries, not belonging in EU or in Germany. The rest, all of the seats are available or are options for students from Germany or EU countries. तो हमारे पास वैसे ही बहुत ही वैसे scrutinize, मतलब बहुत shortlist हो ही जाते हैं वैसे.
You need to have very, very good scores Yeah, to apply. I remember like when I was in my younger days in Germany, like जब मैं Weiterbildung start किया था मैंने यहाँ पे, Hmm. then I used to see Rettungsdienst जो थे, the Rettungsdienst are the paramedic students, right? They're Right. not the students, the employees who work for the EMTs they call in America, or paramedics, okay? Right. वो होते थे या फिर जो नर्सेस होते थे, ठीक है? तो दे कभी हम सुनते थे कि अच्छा ये जो पर्सन विच यू नो कि ऐसे 2-3 साल से नर्स का काम कर रहा है या कर रही है, सडनली दे गॉट अ प्लेस इन मेडिसिन स्टूडियम, दे गॉट अ प्लेस इन मेडिकल कॉलेज। तो कई लोगों से मेरी इस तरह से बात हुई, तो मैं पूछा कि भाई क्या सिस्टम है, अब तो तुमने 5-6 साल से तुम नौकरी कर रहे हो यहाँ पे, तुम्हारी एज है लाइक अराउंड 23-24, तो अब तो मेडिकल का मतलब, तो बोलते हैं कि देखो हमने ट्राई तो किया था 12th के बाद ही या 13th के बाद ही, जो Exactly. जर्मनी का होता है, Hmm. लेकिन उनके नोट्स जो है, नोट्स एंड मार्क्स जो थे उतने अच्छे नहीं थे, कट ऑफ में वो क्लियर नहीं हो पाए। तो यहाँ पे जर्मन्स के लिए होता है कि वाटर साइट का सिस्टम होता है कि दे कैन Exactly. वेट, Yeah. वो वेट होते रहेगा, तो जब जितना आप वेट करोगे उस वेटिंग टाइम के कुछ पार्ट पॉइंट्स काउंट होते हैं उसके, एट ऑन दैट बेसिस ऑल्सो फिर से अप्लाई करोगे तो कभी ना कभी हो सकता है, कभी ना कभी मिल जाएगा। तो ऐसे जो मैं जिन लोगों से मिला था, उन्होंने 6-6 साल वेट किया था टू गेट इनटू अ मेडिकल सीट। Okay. Now one can imagine why I'm telling you this story is that फिर मुझे ना उस वक्त, बिकॉज जब दैट वाज अ टाइम व्हेन डेमिनेट्स वाज स्टार्टिंग, लाइक हम लोग ना स्टार्ट ही कर रहे थे उस टाइम पे, हमको बहुत सारे कंसल्टिंग कंपनीज जो थे, जो इंडिया से जैसे बाहर से, दे वर ट्राइंग टू लाइक वर्क विथ अस, कोलैबोरेट विथ अस एंड ऑल। वो ये मेडिकल करिकुलम पे आप काम करो, एमबीबीएस पे भी, आप पीजी में तो आप कर रहे हो, आप एमबीबीएस पे भी करो। दैट वाज अ थॉट, देन आई रिसर्च लिटिल बिट अबाउट इट, देन आई डिसाइडेड कि ना मैं नहीं करूंगा। तो ना क्यों, बिकॉज दिस वाज द रीजन कि मैं सोच रहा था कि यार ये देखो जो लोकल कैंडिडेट्स हैं, उनके जर्मन नेशनल्स हैं, इतना उनको वेट वो 6 साल वेट कर रहे हैं, ठीक है, उनको हम लोग। डायरेक्टली सीट नहीं मिल रही। तो ऐसे तो रखा हुआ तो नहीं है ना कि कोई, मतलब मैं किसी को बोलूंगा कि भाई तुम ना मुझे इतने पैसे दो, मैं आपको सीट दिला देता हूँ और आप आओगे और आपको सीट मिल जाएगी। तो ऐसा राइट, तो नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है। तो देन आई मीन हियर आई डोंट वांट टू डिस्करेज पीपल, आई डोंट वांट टू से राइट, कि राइट, इट इज दैट्स नॉट नॉट पॉसिबल, दैट्स इट। नॉट द पॉइंट, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिस्करेज एनीवन, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू द फैक्ट्स ऑफ द लैंड कि है, ये मामला है सही में, तो ये फैक्ट है। तो इसके ऊपर एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर कोई मेहनत करता है, लोग आगे बढ़ते हैं, तो और एंड होता भी है लोगों का। बट देन आई वाज रीडिंग समवेयर कि ना सक्सेस रेट क्या होता है, इवन फॉर आई एम टॉकिंग अबाउट द जर्मन कैंडिडेट्स नाउ, राइट, द लोकल वंस जो हैं, जो लोग यहाँ पे टोटल है 10,000 सीट्स, राइट, मेडिकल की, राइट। से 2,000 लोगों को, आई मीन नहीं, 50,000 एप्लीकेशंस होते हैं एंड 10,000 सीट्स हैं इन टोटल। तो 1 in 5%, दैट मीन्स 20% इज द सिलेक्शन रेट। तो it's not bad. I mean, compared to India, it's a huge selection rate. The 20% is a big rate, but that is for local candidates. एंड लेकिन फिर भी 80% लोग हैं जिनको नहीं मिलता है या फिर वो और वेट करते हैं। तो जब when somebody after 12th standard and all, जब वो प्रिपेयर करते हैं अपनी चीज़ें कि हाँ एक टारगेट बनाते हैं कि अच्छा हमको जर्मनी में एमबीबीएस करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए सिलेक्शन रेट आपके लिए भी 20% से बेटर नहीं होगा, मैक्सिमम भी 20%, राइट। तो वो बिकॉज क्या होता है ना कि व्हेन यू प्लान फॉर डिफरेंट कंट्रीज, तो आदमी बहुत सिक्योरिटी ढूंढता है या गारंटी ढूंढता है कि अच्छा मुझे ऐसा नहीं हो कि ना मैं 2 साल 3 साल वेस्ट करूँ या स्पेंड करूँ टू लर्न द लैंग्वेज, टू डू द एग्जाम्स, आई स्पेंड माई मनी, माई पेरेंट्स मनी, एवरीथिंग, एंड फिर ऐसा हो कि ना 2 साल बाद में करिए हुआ नहीं, अब क्या करें, right? तो ये जो चीज है, एवरीथिंग हैज अ रिस्क एंड रिवॉर्ड थिंग, दैट आई अंडरस्टैंड कि ना बिना रिस्क नो रिस्क नो गेन सिस्टम, राइट। इफ यू वांट टू अचीव समथिंग यू हैव टू रिस्क समथिंग, बट देन दैट शुड बी नोन, that what एग्जैक्टली। that should be known, that sure, these are the risks, and I am yes, please go ahead, Nisha. नहीं, वही वो वाली चीज सर, आई वुड जस्ट सेम थिंग दैट यू हैड just said. People are supposed to be very aware of the thing what they are getting into. They are not supposed to have an imagination के because we're going to a developed country या तो वहाँ पे standards अच्छे हैं या known है या demand है doctors की, so you're gonna get in easy or everything is gonna be easy, or because it's known that the studies are free of cost, so आसान होगा। वो नहीं है। It's just about, like you had pointed out, the percentage of students, international students, जिनके लिए seats available है, which is extremely less. तो the success rate है कम, मगर ऐसा नहीं है कि नहीं है, मगर कम है Exactly. as compared to, फिर yeah. अभी तुमने बोला कि
cost free of cost है. तो here also I mean हाँ. let us see. सोचो ना 6 years का कोर्स हमने बोला, right? 6 years का कोर्स है. लिविंग कॉस्ट कितना होता है यहाँ पे इन जनरल फॉर अ एवरेज स्टूडेंट? आई वुड से like blocked account से you can take every month 900 euro, 1000 euro, right? So we assume that according to government thinks that that is the living cost of a student. So we'll assume that number only. राउंड फिगर के लिए हम 1000 कर लेते हैं. ठीक है, उतना नहीं होता, 1000 ज़्यादा है. अब मस्ती में रहेगा तब तो 1000 या 2000 भी कर सकते हैं, बट अगर अच्छे से रहेगा तो थोड़े कम में भी हो सकता है. बट जस्ट कैलकुलेशन पर्पसेस विल टेक 1000. तो 1 ईयर का हो गया कितना? 12,000. And 6 years becomes 6, like how much? 12 into 6 is that 72, right? On an average, yeah, Yeah, 72. on an average. Yes, yes. Yeah, So yeah, 72. 72. Yes. Hmm. So now we are doing our 12 tables here. And Yeah. 12 का table. so okay. So ये 12 in 6 or 72. तो 72,000 euros. So that is the लिविंग एक्सपेंस वन हैज टू एक्सपेक्ट. इसमें अगर आप सोचते हो कि हम कभी इंडिया भी ट्रिप मारेगा बंदा, कि ना मतलब 6 साल में तो ट्रिप मारेगा ही, एंड थोड़ा फिर बुक्स भी लेंगे, ये भी करेंगे, थोड़ा घूमना फिरना भी होगा, ऑल दोज थिंग्स. तो यू कैन अज्यूम कि अराउंड पूरे 6 साल में 75,000 यूरो मिनिमम आपका एक्सपेंस है. तो दैट यू कैन कन्वर्ट इनटू इंडियन करेंसी, तो 70 लाख के आसपास तो आ ही जाता है फिर भी, अभी के डेट में भी, और मे बी 65 लाख. आई डोंट नो व्हाट द करंट सिचुएशन इज. बट तो यही है. तो जब लोग लाइक कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट बोलते हैं, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब अब 65 lakhs फिर भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि टोटली फ्री. ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड कि दूसरे कंट्रीज में आप इफ यू प्लान टू गो टू यूएस or the UK, then it is much more expensive. Like I was doing a webinar with one of the UK doctors for the consulate of this Hamburg. So they had given that, we have also posted in not on this channel but in the other channel. So there they have explained the pricing of the university, like the fee structure. So which is like around 20,000 pounds per year. Okay. So वो तो फिर 100 pounds, 100,000 pounds तो ऐसे ही हो गया वो फीस. तो इन दोज कंपैरिजन तो ठीक है, लाइक सस्ता है. बट कोई ऐसा नहीं समझे कि ना अच्छा ठीक है, फ्री है, I have no कोई source of expense like, होंगे. yeah, हाँ कुछ सोर्स ऑफ ऐसे नहीं है. तो 65 lakhs जो है, 70 lakhs जो है, वो आप मान के चलो. उसके ऊपर हाँ, वो in comparison to the rates that is there in other countries, it's still reasonable. I agree to that, but it's not free. Right. ये है. अच्छा, तो ये हमने फीस की बात कर दी. तो निशा, अबाउट द स्टूडेंट को लेकर, जो जो भी हमारा अभी वीडियो देख रहे हैं, 12th के स्टूडेंट्स है या आफ्टर 12th, तो अब उनको क्वेश्चन करके बोल तो दिया आपने कि भाई आपका 12th जो है सफिशिएंट नहीं है, आपको 1 साल एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, राइट? दैट इज द स्टूडेंट को लेगा. तो वो करेगा कैसे आदमी? लाइक हाउ डू यू गो अबाउट इट? वेयर डू यू गेट एडमिशन? कैसे होता है वो? It's like one needs to get admission into student colleague. The student colleague are these bridging courses जो 2 semester के होते हैं, which is like 13th class, 13th standard जो बोलते हैं यहाँ. So for that you need to have a minimum. It depends on different sorts of student colleague जहाँ पे apply कर रहे हो आप. Some ask for a minimum of B2, some ask for a minimum of B1, some ask for a minimum of C1. But in everywhere, you need to give an exam, which is called an Aufnahmeprüfung, which is like an entrance exam to say, where they test your basic knowledge. आपका primarily German test करते हैं, and this is something which I've also searched a bit, and I found out they test your mathematic knowledge as well. Which I found like as a medical, हाँ खैर luckily CBSE में हमारे पास maths bio दोनों था. मगर जो बच्चे नहीं पढ़े हैं maths, like you have had other options in 11th and 12th, are from science stream, but from other options, like जिन्होंने पास maths नहीं था, computer science or some home science or some other subject. What do they do then? So I find this is a huge one. बेसिक आपका जनरल नॉलेज, आपका जर्मन लैंग्वेज का कैपेबिलिटीज, आपकी जर्मन स्किल्स, एंड आपका मैथमेटिक्स. तो अदर टॉपिक्स जो है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री, लाइक सी बायोलॉजी पूछते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, मैथ्स एंड जर्मन, राइट? तो ये 5 चीजें होती है. जिसको मैथ्स नहीं है तो उसको फिर एडिशनल पढ़ना पड़ता है ना, उसको दे हैव टू डू द ओन लाइक प्राइवेट लाइक कोचिंग, ट्यूशन, लर्निंग फ्रॉम फ्रेंड्स एंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स. तो थोड़ा मेहनत हो जाता है उसमें. तो वो एक लाइक एडिशनल फैक्टर है उसमें. तो ये 1 ईयर का स्टूडेंट को लेकर हो गया. उसके बाद स्टूडेंट को लेकर खत्म होगा, देन दे विल टेक अनदर एग्जाम, राइट, टू पास द स्टूडेंट को लेकर.
Exactly. They have, it's called the Fachsprachprüfung, which is like your specific. Feststellungsprüfung. Exactly. Fest, Feststellungsprüfung, yes. sorry. मैंने Fach, Fachsprachprüfung मेरे पे चली गई. Feststellungsprüfung. right. No, Right. I thought, okay, I mean, because since you have done your MBBS from India and you have done Fachsprachprüfung here, तो वो ना वो reflexively आ जाता है हमारा Fachsprachprüfung, हमारा वाला फाक Kenntnisprüfung, एग्जाम हो गया. अपना वाला. तो अभी लेकिन हम बात कर रहे हैं हमारे लिए लेवल पे नहीं, हम बात कर रहे हैं हमसे जो थोड़े जूनियर हैं, मुझसे तो बहुत ही जूनियर होंगे तो उनके लिए. So, yeah, so yeah, exactly the Feststellungsprüfung. अब जो Feststellungsprüfung. Yeah. Feststellungsprüfung जो है, that is very significant because Right. इसका जो score है, that is going to count on your admission. Yeah. Right. ये काउंट होगा. एक तो तुमने बोला पहले कि ना your से करिकुलम का अपने स्कूल का 10th 12th का जो एवरेज निकल के वो एंड Feststellungsprüfung, ये दो Right. चीजें. इसके अलावा भी और कुछ है क्या? Is there something else? Yes, there is one more thing. जब आप universities after you give this Feststellungsprüfung, उसमें आपका और इस एग्जाम में specifically you have subjects like your physics, biochemistry, bio and chemistry जो आपने अपना 12th में पढ़ा होगा. Basically it's like a NEET exam जो हम PG medical school में entry के लिए देते हैं. But apart from these two, there's also when you apply, when you choose, for example, this is nowadays mostly in majority of colleges, for example, Heidelberg or Berlin Kaleli Charité or something, they have got their specific entrance exams as well, which is called AS exams. So उन एग्जाम्स में you have, when you give those exams, those are also specific universities के specific entrance exams. When you give those exams, those scores add up to your other scores, which is your 12th ka average and your Feststellungsprüfung ka average. To that adds this average, which अगर उसमें आपके अच्छे हैं तो it improves your total points या marking system. तो वो as a plus point काम करता है. ये जो टेस्ट है, जैसे निशा ने बताया कि AS दिस ausländische Studierende, that means foreign students, basically it can be translated roughly like that ausländisch, foreign, and Studierende, so that is how the AS comes, like ausländische Studierende. So ये टेस्ट होता है. And yeah, so basically for that means we have three things that one has to take care of, like, or that depends, like your admission into a college depends upon these three factors. All right. So, yeah. Now that you have all three requirements, like your school ka scores and your AS ka score and your FSP ka score, then how will you proceed? What will you do? Now, this is not a very exclusive video where I have exhaustive video where I've covered everything, because there is lots of documentation required, जो कि आपको खुद ही करना होता है. इसमें आपको like you have to educate yourself, learn how it is done, and then you have to do it yourself. लेकिन I'm talking the brief points, the salient points जो कि important है. Now, एक पोर्टल है uni assist का. Okay, uni assist के पोर्टल से you can apply that. This is relevant also for engineering students and other like students who want to study engineering. तो उसके थ्रू पोर्टल है, डिफरेंट जगह आप एप्लीकेशंस भेज सकते हो. नाउ एप्लीकेशंस भेजने में भी पैसे लगते हैं वहाँ पे ना. स्टार्टिंग में कुछ में 70 लगता है, उसके बाद में फिर 30 यूरो हर एप्लीकेशन का लगने लगता है. तो दैट इज ऑल्सो नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट. तो एक वो होता है. जब आप वो भेज देते हो तो फिर आपको, इफ दे लाइक योर एप्लीकेशन, दे विल कॉल यू फॉर इंटरव्यू एंड ऑल, एंड और इफ यू डोंट लाइक इट देन तो फिर यू विल रिसीव अ रिजेक्शन फ्रॉम देम. तो ऐसे बेसिकली दिस इज द प्रोसेस about getting into medicine in Germany. And Broad. yeah, broadly, I mean, as I've Yeah. mentioned कि ना ये बहुत बड़ा process है, लंबा process है. We cannot have it in a such short video, but Yeah. in general यही है. If you have more questions and queries about that, you're welcome to write in comment section. Even though we are not experts in medical curriculum in Germany, we have not done it ourselves, and also I have been dissuading so far people who I met कि यार मुश्किल है, मतलब not dissuading basically, but I have been telling the truth to them कि ना Really. अपना आप रोजी लाइफ में मत रहो कि ना सब कुछ अच्छा है, अब तो हम जर्मनी जाके डॉक्टर बनोगे लेकिन बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे उससे पहले. तो दैट इज व्हाट आई हैव बीन टेलिंग. सो या, सो मेरी जितनी भी नॉलेज है, I will definitely reply to your comments on this.
As we promised right at the beginning, I hope that you guys are still watching us. तो अभी हम बात करेंगे कि प्रोज क्या है और कॉन्स क्या है. निशा, क्या है, what are the positive things that one that will draw a foreign student towards Germany? I believe the biggest positive, what would attract anybody to come to Germany is the demand for doctors. I believe here there is a huge demand, and I agree to a certain level. There's a lot of competition for students' seats, for medical seats. But once you are in the system, once you have done your MBBS, once you're done with all of your exams, and once you are a medical graduate, to get a job, there you have there's so many seats and many job opportunities over here that one can explore in various fields, so that has to be a huge plus. Right. Here, I'll totally agree to that. Here, one can see it like this. Struggle तो कभी ना कभी करना ही है ना. अगर आप MBBS कहीं और भी करते हो, and then you want to come to Germany or go to any other country for that matter, तो आपको licensing exam, licensing process, job finding, and as a foreigner, because आपकी language broken होती है. I'm talking about if you do your MBBS in India, for example, like हमने किया है, तो हमारे केस में we also had to put up a fight when entering into the system here. Okay. Right. तो अगर ये फाइट आप 12th के लेवल पे डाल देते हो, देन आपका यू विल बी हियर इन द सिस्टम, यू विल बी अप्रूवेशन, आपको जर्मन लाइसेंस होगा आपके पास में, 5-6 साल के बाद में आपको पासपोर्ट भी मिल जाएगा यहाँ का, यू विल बी सिटीजन हियर. एंड उसके बाद आपको रेडियोलॉजी करनी है, आपको प्लास्टिक सर्जरी करनी है, आपको न्यूरो सर्जरी करनी है, आपको जो भी ब्रांचेस करने हैं, वो यू विल बी द लोकल पर्सन बेसिकली देन. तो आपको ना वो जो आउटसाइडर्स जैसे हमको कंपटीशन फेस करना पड़ता है या फिर बैरियर हो जाता है कि अच्छा सम ब्रांचेस आर वेरी डिफिकल्ट टू गेट इनटू, वो आपके लिए नहीं रहेगा. तो दैट इज वन बिग पॉजिटिव इन माय व्यू, कि आप शॉर्ट टर्म नहीं सोचना है, लॉन्ग टर्म सोचना है कि ना, नो डोंट थिंक अबाउट 6 years ऑफ योर MBBS बट 12 years ऑफ MBBS प्लस PG. तो ये दैट वे इज अ वेरी बिग प्लस इन माय. Sorry. नेक्स्ट पॉजिटिव दैट आई फाइंड इज दैट एक तो डेवलप्ड कंट्री के अपने बेनिफिट्स होते हैं, राइट. मैंने बोला पासपोर्ट आपको मिल जाता है, तो देन यू आर सिटीजन ऑफ अ डेवलप्ड कंट्री, तो वो एक डिफरेंट, लाइक दैट इज आल्सो अ पॉजिटिव, वन कैन नॉट अंडरमाइन दैट. उसके अलावा होता है कि जैसे जॉब सिक्योरिटी की बात थी कि ना, बिकॉज वंस यू आर हियर, तो आपको कभी भी जॉबलेस तो कहीं भी नहीं रहते डॉक्टर्स जॉबलेस ऐसे तो, बट स्टिल हियर आल्सो यू विल हैव गुड पोजीशंस एवरीवेयर. Another huge plus point that I find is the medical studies ki degree, and also the post-graduation degree. What we receive from Germany is very highly reputed and acknowledged all over, especially specifically Europe. You will find it very with high regards, and also in Gulf, and also in UK. Yes, So UK still accepting it. अब UK कब तक करेगा वो तो नहीं पता है, that's a but it is like it is still accepting it even after Brexit. So about this I made a video about PG candidates. तो 2,000 लोगों ने देखे उसको, तो I was like this is also a topic I should cover sometime in the future. So, yeah, this is, yeah, and the quality of training that one receives here, I was very what do you say, impressed by the quality that when I newly came here and I saw the interns like doing so many things. The ultrasound intern can do ultrasound, he knows CT, about CT scan, MRI scan, they assist in operations and all. So a bright intern knows a lot, like what I knew in comparison to what I knew as an intern. I Okay. completely agree. When I I did as well, was our knowledge was mostly bookish knowledge. Think that, I mean, you studied for the exam, you passed the exam, but practically, and also there's a thing that I did from a government college, right? The government colleges are also always short on resources. Like उसमें ना आपको उतने CT scans दिखेंगे नहीं. और I'm talking also about like 10 years back. ना I graduated in 2011, right? तो मैं तब की बात कर रहा हूँ. तो उस टाइम पे हम एक वो CT मशीन ही आधे टाइम बंद रहती थी, खराब रहती थी, और वो कभी आता नहीं था उसका स्कैन, वो आता था वो भी कुछ, आई एम सरप्राइज कि लोग कैसे उस पे आइडेंटिफाई करते थे और कैसे उस हिसाब से ट्रीटमेंट करते थे, बिकॉज इट वाज नॉट सीएबल. लाइक वो स्कैन्स उसमें कैसे देखोगे फिल्म्स में. तो right. कंपेयरिंग कि व्हाट आई न्यू एज एन इंटर्न, आई फील दैट द ट्रेनिंग जो यहाँ पे लोगों को मिली है, दे हैव दैट्स वेरी हाई हाई क्वालिटी ट्रेनिंग. मे बी थियरी उनको उतना नहीं आता होगा जितना हमको आता, बिकॉज हम Exactly. Yeah.
I was talking recently to one guy जो हमारे consulting program में, and he was telling कि he was also one of the government college में, वो intern है वो. तो वो बोलता है कि ना हम books तो पढ़ते हैं US की, उसमें होता है कि ना आप ये प्रोटोकॉल है, ऐसे करो वैसे करो, and when you go in the ward तो ना ये है ना वो है, करना क्या है, तो they ये make सब something of their own कि ना चलो ठीक है, इसके बदले ये कर लेते हैं, इसके बदले ये कर लेते हैं, तो लगभग मोटा मोटी हो जाएगा टाइप से, हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके तो होता है. तो आई टोल्ड हिम ऑल्सो कि जर्मनी में आई हैव नेवर फेस दैट. जर्मनी में ऐसा है कि आपके बुक में जो लिखा है ना कि मान लो Exactly. देयर इज अ केस ऑफ, और यू हैव अ थॉट दैट दिस पर्सन कैन कुड हैव अ पल्मोनरी एम्बोलिज्म कि ना लंगन एम्बोली, तो आपको सीटीज करना है उसको, स्पाइरल सीटी विद कॉन्ट्रास्ट मेटल. तो आप जिस हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, आपका सीटी होगा वहां पे, सीटी स्कैन, एंड उसमें आपको कॉन्ट्रास्ट मेटल देके आप रात के 2 बजे भी उसमें कर सकते हो डायग्नोसिस, और रेडियोलॉजिस्ट आपको बताएगा रात के 2 बजे भी इसको है कि नहीं है. हम्म, तो दीज थिंग्स जो आप बुक में पढ़ते हो, दैट इज टोटली कन्वर्टेड इन प्रैक्टिस हियर. सो दैट आई फाउंड वेरी इम्प्रेसिव कि ना ये हमने मिस किया है. आई मीन वी कैन नॉट कंपेयर द टू सिस्टम्स. आल्सो टाइम हैज पास्ड, सो मे बी नाउ दे आर डूइंग बेटर. आई मीन आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन इंडिया राइट नाउ, बट तो ये डिफरेंस मुझे लगा था. इसी वजह से ऑल्सो ट्रेनिंग इन जर्मनी, दैट इज ऑल्सो वन बिग पॉजिटिव फॉर ट्रेनिंग इन जर्मनी. right. अच्छा, तो पॉजिटिव तो हमने बहुत बोले, पॉजिटिव तो बहुत लोग बोलते हैं. अब नेगेटिव की बात करते हैं कि Yeah. वर्स्ट वर्स्ट पार्ट और द सबसे नेगेटिव पार्ट क्या है, व्हाट डू यू थिंक? I believe genuinely सबसे बड़ा like a challenge has to be the language. The language is the biggest hurdle. Once when you crack it ना, you will be the आप सब कर लोगे फिर. पर language अगर आप एक बार crack कर लो, that's a huge hurdle. ट्रू Huge, ट्रू, huge टोटली task. टोटली एग्री. लैंग्वेज जो Yeah. है वो क्रैक, तो कोशिश तो हर कोई करता है, होता नहीं है किसी से भी. तो आई मीन यू कोशिश में कैन लगे हुए यू हैं अभी तक. कोशिश में लगे हुए, कोशिश में मैं भी 6 साल 7 साल से लगा हुआ हूँ कोशिश में. यू आर ऑल्सो वर्किंग टुवर्ड्स इट सिंस हाँ. कपल ऑफ इयर्स नाउ. सो लेकिन हाँ वही है कि एक सर्टेन लेवल तक तो आ जाता है ना, वर्किंग नॉलेज लेवल तक. एक मोटर जो नेटिव स्पीकर है वो तो यू विल नॉट अचीव, तो वो आपका एम भी नहीं है. लेकिन Right. ऐसा लेवल लैंग्वेज का वेयर यू फील कंफर्टेबल कम्युनिकेटिंग योर थॉट्स एंड यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन. इसमें Exactly. ना फिर आप वो टीम में आइसोलेटेड फील नहीं करोगे. लेकिन अगर लैंग्वेज बैरियर है, ये होता है मेरे साथ, अब पहले होता था, अभी भी होता है कई बार कि ना आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई बहुत फ्लुएंटली एक्सेंट वाले लैंग्वेज में बात कर रहे हैं आपस में, दे आर टॉकिंग टू अमंग देमसेल्व्स, देन Yeah. इफ आई डोंट फोकस, ऐसा होता है ना कि हियर से ऐसे कई बार होता है कि कुछ कुछ बोला इन लोगों ने, लेकिन इट वाज नॉट माय नहीं. कंसर्न, आई डिड नॉट पे अटेंशन, आई डिड नॉट इवन अंडरस्टैंड, ऐसा होता है. हाँ, इफ And दे टॉक टू, especially, I'm sorry I'm interrupting, but especially after 24 hour की जो shift होती हाँ है, when हाँ you're हाँ, completely drained out, उसके बाद तो राइट German जरा भी नहीं आता. राइट राइट. अरे आई यूज्ड टू लाइक, Travel a lot. जब पहले तो जब वीकेंड आता था तो, एंड इफ यू डोंट गो टू द हॉस्पिटल ऑन सैटरडे संडे, तो मंडे को थोड़ा ऑड लगता था बोलने में. तो, I had that as well. या आप वेकेशन के बाद वापस आते हो तो आपको आपको हम्म, पहले फॉर्मुलेट करना पड़ता था, सेंटेंसेस दूसरी लैंग्वेज में बन रहे होते थे राइट राइट. दिमाग में, and then you translate it So and this then it is, takes a lot now of when time. you think about it, it's funny, but Yeah. when it's really, when you're working there, it's not funny. Yeah. Okay, because that is a stress situation which you have to work in, and your understanding certain things and not understanding certain things can cause, it would be a matter of life and death for someone. Death for someone. Okay. Yeah. Yeah, so Patience. that's why then that time it's not funny. That time it's very very serious matter. So वो barrier जो है वो हमारे लिए भी है. Like now I'm a FACATS. I've already completed my specialist training here. Nisha is in her residency now. तो हमारे लिए अभी भी है ये, और जो लोग आएंगे उनके लिए भी रहेगा. तो ये Right. biggest hurdle as language. निशा, what do you think about the discrimination? Because इसके बारे में मुझे बहुत सवाल आते हैं कि ना ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होता है क्या, स्पेशली फीमेल्स के साइड से आते हैं इस तरह से कि ना हाउ सेफ इज इट, हाउ इट, उस बारे में व्हाट वुड यू से? When I compare it to other places, honestly speaking, safe wise, I'll say definitely safe. मगर when I compare it to especially India, and have also been brought up in Saudi, तो Gulf का भी थोड़ा बहुत idea है. I have done a couple of hospitations या courses over there as well. So I believe surgery especially is a completely male dominant वाला, completely नहीं तो majority male dominant बोलूँगी. तो especially for females it becomes like more so. I do really get these sentences कि अरे are you a doctor because आप इतने young हो और आप इतने छोटे हो या आप लड़की हो, and you get those sentences. But I believe it's way better, and
as compared to what I've seen in Gulf and especially India, maybe percentage of females doing surgery is more. And especially learning wise, जो especially over arts or जो consultants, जो assistant arts or जो associate professors or assistant professors सिखाते हैं, that's marvelous. So And for apart from the professional like feelings that you said there about the discrimination, all when you live here as a life as a student or कोई जैसे as a student or as a normal like foreigner living in Germany, how do you think about the safety things and the discrimination that you might face somewhere? So as have you ever like देखो यहाँ पे मैं पहले disclaimer दे देता हूँ कि ना एक subtle डिस्क्रिमिनेशन जो होता है ना वो रहता है। अगर कोई बोलता है ना कि हाँ बिल्कुल भी नहीं है तो झूठ बोल रहा है, या तो उसको उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, या तो नहीं कर पा रहा है, ठीक true, है true. राइट, ही इज फीलिंग दैट सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, सटल एक रहता है। दैट शुड आल्सो नॉट बी द प्रॉब्लम, बिकॉज वो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो ना। अब मैं कभी कभी लाइक मेरे कॉलीग्स लोगों से बात होती है एंड व्हेन समटाइम वी टॉक अबाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑल दिस थिंग, जैसे जनरल टॉपिक डिस्कशंस में, तो मैं बोलता हूँ कि यार यहाँ पे तो ठीक है, मैं एज ए या कोई बाहर का आदमी फॉरेनर आके यहाँ पे डॉक्टर है, काम करता है, एवरीथिंग, तुमको क्या लगता है इंडिया में द अफ्रीकन स्टूडेंट्स हु गो देयर टू स्टडी, ओके, उनके साथ कैसे ट्रीटमेंट होता है? Exactly. उनको डू यू थिंक दैट दे वुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी एज ए इंडियन स्टूडेंट in a university or for a profession? If there are two doctors, one is an Indian doctor and one is an African doctor, ये तो मैंने बहुत दूर की बात बोल दी ना कि अफ्रीकन डॉक्टर वर्किंग इन इंडिया। आप इंडिया के, आप ऐसे समझ लो कि दिल्ली में एक लड़का है, दिल्ली का है या पंजाब का है एक डॉक्टर, एंड एक डॉक्टर है जो केरला का है, या Mm, एंड बोथ विल दीज बोथ डॉक्टर्स be treated similarly in the same in that yeah, hospital? Will they both get similar opportunities? I totally disagree. So I would when you think on the bigger perspective, then ये जो cribbing होता है ना कि discrimination, ये वो हाँ थोड़ा रहता है हर जगह, तो ना मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट इन माय व्यू हर जगह ही होता है। तो फिर समहाउ ना मैं, मतलब दिस agree. इज वेरी पॉलिटिकली इनकरेक्ट टू से कि ना आप उसको एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट तो नहीं करना होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नहीं हर जगह ही होता है। what thoughts do you have on that? I do agree because in the beginning, and me especially as a Berufsanfängerin, someone who has, which means like somebody who's first starting out with your job first, पूरा complete कोई experience नहीं था, तो you get to hear especially flag वगैरह जो sister लोग भी होते हैं, तो they do pass a lot of comments, अरे ये कहाँ से आ गए, इनको ये नहीं आता वो नहीं आता, because they have been working in the system, they are familiar with XYZ things जो हमें नहीं आता, and we take time. So I do believe, of course, like you have pointed out, it's not correct to take it, but I do believe in the beginning, आप जब सीख रहे हो, to focus on the सीखने वाला process. Once when you reach that level, my aim is mostly when you reach that level that you can say and do things, it's mostly your work speaks for it. So Right. I And do I feel I also feel कि ना जब जब when you reach that level ना, तब वो बंद भी हो जाता है, exactly. वो बंद हो जाता है। हाँ, दिस हैव फेल्ट विथ माई सेल्फ ओनली, लेकिन yeah. बिगिनिंग में मुझे ज्यादा वो लगता था, उसके बाद ना या तो या आई डोंट, मुझे वो डिफरेंशिएट मैं अभी तक नहीं कर पाया पर्सनली, हैव आई बिकम यूज्ड टू इट और हैव आई और हैज इट स्टॉप्ड? I believe it has stopped सो because it comes with आपका experience and आपको या लोग जब देखते हैं, they come get used to, या they understand आपका thought process क्या है, आपके काम करने का तरीका क्या है, and then they understand, हाँ आता है इनको भी, तो I तो believe. वही है, तो दैट्स वेरी गुड पार्ट यू सेड निशा, दैट ये चीज जो अभी हम ये वीडियो तो उनके लिए जो अभी स्टूडेंट हैं या बनेंगे मेडिकल स्टूडेंट इन फ्यूचर, मे बी इन जर्मनी, मे बी इन सम अदर कंट्री, but these things are equally important to them as well. If you go to any foreign country, any a white country basically that you can say, and you Yeah. are coming from South Asia, India, तो फिर ये आपको हर जगह ही मिलेगा। आपको, आप यूक्रेन जा रहे हो तो ऐसा नहीं होगा यूक्रेन में नहीं मिलेगा आपको, या रशिया जा रहे हो तो रशिया में नहीं मिलेगा, Hmm. हर जगह मिलेगा। सो वन हैज टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड यू कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ। तो फिर जो कमेंट्री होता है साइड का, या जो एक सटल डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। देन दे सी अ वर्च्यूज इन यू एंड नॉट द Right. negative things. I mean to say that they try to ignore the color of your skin or the language accent that you have. So Exactly. all right, so हमने negatives की बात की अभी, इसमें हमने discrimination की बात की, और negative, how is the work life balance in Germany? I Do you think believe it. is it a positive or a negative?
Um, I believe in the beginning it's difficult because when you're extremely excited and you want to learn a lot, then you want to invest a lot of time into a learning process, and then your consultants or your seniors tell you, no, it's fire hour, it's like your end of duty time, go home. कोई घर Which is जाओ. very sweet, which is very sweet. They go like, go, you're supposed to have a life. You're supposed to go have a personal life, not just completely make your life your entire hospital. So I believe it's a huge plus उस aspect में, but then negative because आप बहुत excited होते हैं, आपको बहुत वो होता है, curiosity होती है चीजें सीखने की, मगर उस aspect में वो हो जाता है. But So yes, I totally agree कि ना, और वो ऐसे भी होता है कि it's not only the beginning phase में आपकी like you are very like motivated and you want to do a lot of things, but later on also your work has to be done, right? So yeah, जैसे आप प्रोग्रेस करते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ते जाती है, आप ज्यादा काम लेने लगते हो, एंड जब आप ज्यादा काम लेने लगते हो फिर ऑल्सो टेक्स टाइम, then you have a responsibility towards those patients that you have. तो उसमें ना कई बार ऐसा होता है कि इवन दो यू हैव लाइक जैक्सन ओवर एट 4 PM घर जा सकते हो, आप नहीं जा सकते बिकॉज आपका काम खत्म नहीं हुआ, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, राइट? exactly. तो फिर आप रुक के करते ही हो काम वो, तो दिस वे आई मीन वी कैन नॉट कंपेयर द स्ट्रेस दैट डॉक्टर्स इन लाइक इन यूएस और इन इंडिया हैव द रेजिडेंट्स, बट रेजिडेंसी इस हिसाब से यहाँ पे कूल है, बट इतनी भी कूल नहीं है कि ना कोई काम ही नहीं है, मतलब Exactly. ऐसा भी नहीं है कि ना, मतलब एकदम इतना इतना वर्क लाइफ बैलेंस है कि ना जस्ट नो वर्क एंड ओनली एंजॉयिंग लाइफ, ऐसा भी नहीं है. So dear friends, in this video, we have tried to bring to you different perspectives that we feel about 12th pass students or the aspirants who want to pursue MBBS in Germany, or I mean, I always say MBBS, but I mean is Medizinstudium as a course to become doctor. So I hope this video was useful to you. If you have more information, if you think that, okay, we have skipped something, because I've already told you, this is not an exhaustive video. There are many aspects which can be covered more and more. It will only require time and effort. I mean, I hope next time we can come up with something more important and like more structured for you. But if you have anything more that you want to share and add, do write in comment section. If you like this video, then say so please. And if you don't like, if you think that some information that you have given was incorrect, which I highly doubt is going to happen, but do write that. We will like to check our facts then. All right, share this video with your friends who are also aspirants of MBBS or Medizinstudium in Germany. And yeah, and have a nice day. Bye bye. Have a nice day.